Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about normal distribution. These four topics will be covered. Of, First of all, कि normal distribution क्या है, क्या properties हैं, how we calculate its probabilities using the table, and how do we approximate binomial using normal distribution. ये सारे के सारे टॉपिक टाइम स्टैम्प्ड हैं, तो अगर आपको स्किप करना है तो आप टाइम स्टैम्प देखकर स्किप कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, normal distribution without any debate is the most commonly used probability distribution. It's continuous. What do I mean by continuous? Okay, a random variable in normal distribution can assume any value from negative infinity to positive infinity. Application, it's used in a variety of natural processes like measuring heights, weight, test score, scientific measurement, rainfall, and so on. The probability distribution function we use in normal is this. It has many forms. For example, many write it this way. यहाँ पे by the way sigma square होता है. So instead of writing it this way, you can write it like this. Minus 1 upon 2 x minus mu sigma whole squared. Many people write 2 with this. But any of these things does not matter because हम इसकी probability calculation tables की मदद से करते हैं, formula से नहीं करते. अच्छा, first of all, we'll look at some properties. The most crucial property of normal distribution is symmetry. What is symmetry? That both right and left sides are mirror image of each other. Both of them has 50% and 50% of thread. It is very crucial. आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल होता है. Secondly, the center part mu. This mu is both the mean and the median और यही mod भी है. इस पॉइंट से ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है. सेकंड, it depends on only two values, mu यानी mean and sigma which is the standard deviation. So at one standard deviation away from mean, the distribution contains 68.3% of data. At two standard deviations from mean, distribution contains 95%, and across three standard deviations, the distribution contains 99.7% of your data. Not only this, mean and standard deviations have many important roles to perform. कैसे? सबसे पहले जहां मीन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मीन म्यू है, ये मीन ज्यादा हो जाता तो बेसिकली ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन राइट पे ट्रांसलेट हो जाती. और अगर इसका सिग्मा ज्यादा होता तो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, इट वुड बिहेव समथिंग लाइक दिस. मतलब as sigma increases, distribution becomes wider, more flat, and when sigma decreases, distribution is more compact. ठीक है. We'll use these properties more in the next questions. जो अब इसके बाद आएंगे. Calculation of normal probabilities. Normal probabilities को डायरेक्टली कैलकुलेट करना उस तरीके से पॉसिबल नहीं है जैसे फॉर्मूला दिखाया था, फॉर्मूले से. ठीक है. The first thing we do to calculate these probabilities is we subtract the mean and divide by standard deviation. इससे जो वैल्यू हमारे पास आती है, we refer to it as z-score, and this z-score is used to calculate normal probabilities. Think of it. Assume that for a variable I have mu is equal to 5 and sigma is equal to 2, and I need to calculate the probability that x is less than let's say 9.
So instead of calculating it directly, what we do is we subtract the mean, divide by standard deviation, और रिजल्टिंग जो वैल्यू आती है दैट इज यूज टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। लेट्स से इस केस में आएगी z इज लेस देन 2। अब ये जो z वैल्यूज हैं इनके कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसको हम रेफर करते हैं एज z टेबल। ठीक है, अब कीप इन माइंड दिस z लेस देन इक्वल टू 2, या z फॉर एग्जांपल z की कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेट्स से z लेस देन 1.5। तो z लेस देन 1.5 के लिए I would go into this table, look for 1.5, and since 1.5 is actually 1.50, ठीक, जो second decimal place है that is shown here, और 1.5 यहाँ पे आ रहा है, तो corresponding probability is going to be 9332, right? अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि दिस टेबल ओनली होल्ड्स फॉर z लेस देन सम प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आई नीड टू कैलकुलेट अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी विच इज फॉर z ग्रेटर देन 1 और 1.00 टू बी एग्जैक्ट, तो आई जस्ट यूज द probabilities basic concept according to which 1 से माइनस करके दिस कन्वर्ट्स इनटू z लेस देन 1, और z लेस देन 1 को कैलकुलेट करने के लिए यू कैन गो टू 1.0 and 0 which corresponds to 0.8413, and using this value you can calculate your probability। ठीक है, अच्छा, similarly if I have to calculate a probability that is between two z values, for example अगर we have the same example where mu is equal to 5 and sigma is equal to 2, and I need to calculate the probability that x lie between 3 and 7. So when we subtract the mean and divide by standard deviation on both sides, this transforms into something like this, that z is between -1 and 1। ये क्रूशल एग्जाम्पल है क्योंकि नेगेटिव्स के लिए टेबल अक्सर एग्जाम में नहीं गिवन होता। तो लेट्स लुक एट इट हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले तो I'll subtract the z probabilities of these two numbers, upper limit minus the probability of lower limit, then z लेस देन 1 तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं just by going there। Less than 1 is basically 1.00, so your answer is this 0.8413। What about z लेस देन -1? मैं आपको probability से ही explain करूंगा of how it would work। Let's see, assume a normal distribution curve, assume that this is 1 and this is -1, और ये भी याद रखिएगा there is a symmetry between two sides। ठीक है, so z लेस देन 1 जो होगा, this entire thing is simply 1 minus of this thing। मतलब क्या है, let me explain कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 1 है, ये -1 है, तो जो ये साइड होगा वो एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज होगा, राइट? सो लेस देन 1 वो 0.84, तो -1 के लिए जब भी नेगेटिव आ जाए यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट 1, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। इसी चीज को अगर मैं जेनेरिकली लिखूं तो आई कैन से दैट z लेस देन एनी नेगेटिव वैल्यू is equal to 1 minus probability z less than positive of that number। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूजुअली एग्जाम में वी आर गिवन विद पॉजिटिव जी टेबल्स, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, लाइकवाइज लेट्स लुक एट जस्ट वन मोर एग्जांपल, और फिर आगे जो एग्जाम के सिनेरियोज हैं जिस समय आ सकता है उसको देखते हैं। लेट्स से यू हैव सी बिटवीन दिस, तो बेसिकली ये क्या होगा, सी लेस देन 0.5 माइनस सी लेस देन माइनस 0.5, एंड दैट गिव्स यू सी लेस देन 0.5, तो आप टेबल में से देख सकते हैं, बट फॉर -1 आप इसको 1 माइनस 0.5 कर देंगे एंड यू गेट योर आंसर, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको नोट कर लेंगे। देन this is a solved question which explains that score of a GMAT test are distributed with mean this and standard deviation this. Probability of an individual scoring above 500. तो बेसिकली आपने 500 को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है इनटू जी स्कोर which is minus 0.24107, right? And then you can find it using, अच्छा दिस इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन को जब आप कन्वर्ट करेंगे दिस कन्वर्ट्स इनटू 1 minus p c less than 0.24 and that gives you the answer, right? अब ये होगा कैसे, लेट्स सी। 0.24 can be find here, this is 0.2, second place में भी है 4, 0.24 is 0.5948, this is 0.594, right? So then we have another example. How high must an individual score in order to land in the highest 5% of these sports? मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, दे आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन एक्स फॉर विच जिससे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 या 5%। अब इसमें आपको रिवर्स मेथड में जाके देखना पड़ेगा। जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले ट्राई टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी इन जी टेबल विच इज क्लोजर टू 0.05। सही है। अब ये पॉजिटिव टी जी टेबल में तो हो नहीं सकता, तो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन सब्ट्रैक्ट दिस 0.05, तो मुझे पॉजिटिव जी टेबल की वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। 0.95, लेट्स सी। 0.95 कैन बी क्लोजेस्ट जो आपको मिल सकता है वो मिल सकता है ऑन -1.6 -1.65, राइट। तो बेसिकली you had to find 0.05, so you will basically write it as -1.65 or 645, ठीक है। और बेसिकली 1 से माइनस करके आपने इसको लेस देन में कन्वर्ट कर लिया। you calculate z and we know that z is equal to x minus mean over sigma। मीन भी नोन है और सिग्मा भी नोन है। if you just plug in the values you get, बेसिकली आप यहाँ से स्टेप्स देख सकते हैं। चूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सॉल्व करने के बाद यू कैन राइट योर आंसर, राइट। अच्छा, लास्ट टॉपिक इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल प्रोबेबिलिटीज। अगेन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने देखा था, प्रॉब्लम बन जाती है व्हेन n becomes too large। in that case we use normal approximation। now some of you may ask हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं यूज कर रहे। पॉइजन को देख लीजिएगा। पॉइजन was used to approximate it when n is large and p is small। बट नॉर्मल किसी भी केस में अप्रोक्सीमेट कर सकती है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटीज को, गिवन दैट np is greater than equal to 5 and n1 minus p is greater than equal to 5। okay,
अच्छा, नॉर्मल के लिए म्यू और सिग्मा कैसे फाइंड होते हैं? वी यूज दिस टू फॉर्मूलाज टू फाइंड म्यू एंड सिग्मा, एंड फिर नॉर्मल कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी यूज वन कंटिन्यूटी करेक्शन. फॉर एग्जांपल, if I want to calculate in binomial distribution that probability that x is equal to 0.2. So when it goes into normal approximation, we subtract 0.5 and make it 1.5, और ऐसे ही 0.5 ऐड करके हम इनके दरमियानी से कैलकुलेट कर रहे होते हैं. सिमिलरली, ये टेबल का बेसिकली एग्जांपल्स के जरिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हेन वी कैलकुलेट x लेस देन समथिंग, तो हम उसके लिमिट में 0.5 ऐड करके नॉर्मल में उसे अप्रोक्सीमेट करते हैं. ऐसे ऐसे ही अगर x इज लेस देन इक्वल टू समथिंग, सेम ट्रीटमेंट है लेस देन और लेस देन इक्वल टू का. लाइकवाइज व्हेन इट्स मोर देन, तो मोर देन में एक सब्ट्रैक्ट होता है तो ये हो जाएगा 2.5. सिमिलरली व्हेन इट्स मोर देन इक्वल टू, इट्स 0.2.5. राइट. ऑलराइट, फिर एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हाउ वी कैन डू इट. फॉर इंस्टेंस, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 0.4 when, yeah, let's do it this way. X is equal to 40, n is equal to 500, and p is equal to 0.4. So you can verify it later that in this case both np and n1 minus p is greater than or equal to 100. So you can use normal approximation. Let's say I'm interested in this probability. So probability of x is equal to 50 जब normal approximation में जाएगी तो कंटिन्यूटी करेक्शन से ये बन जाएगी 39.5 to 40.5, which when mean and standard deviation are subtracted, so mean पहले निकाल लेते हैं. np is 500 times 0.4, which is 200, and sigma can be found using this formula. बस आपने सिंपली यहाँ पर मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड करके इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जी स्कोर से, जी टेबल से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड देन सिंपली पुट इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को बेसिकली कैलकुलेट कर लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जी लेस देन दिस, सॉरी 40.5 minus z less than 39.5 minus mu over this. राइट. इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन सारे के सारे इसका पार्ट है, नीचे वीडियो के कैप्शन में मौजूद है. यू कैन सी देम इफ यू वांट. ठीक है. थैंक यू सर.